Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, in our previous session, as you know, that we were doing chapter number 17. Okay, and in today's session as well, I am going to continue with the same topic, that is from chapter number 17. Okay, so now, as you know, this chapter number 17 is the mixed bags, in which you will find the different questions from different chapters from your maths book. Okay, so we have already done up to sum number 32, and today we are going to start with the next sum, that is 33. So class, kindly open your books at page number 194, that is chapter number 17, that is from chapter number 17. So here I am describing the topic, chapter number 17, okay, and the page number is 194. Okay, so all of you just open your books at page number 194. Okay, so the topic from the today's session, that is question number 33. Okay, so the question 33 is 3 packets of biscuits weigh 3 upon 12 kg, 5 upon 12 kg and 1 upon 12 kg respectively. What is the total weight of 3 packets? Okay, so as in the question it is given, we are talking about the 3 packets of biscuit. The biscuits के 3 packets की बात हो रही है. Okay, the weight of the first one is 3 upon 12 kg. Second one is 5 upon 12 kg and the third one is 1 upon 12 kg. तो ये हमारे 3 बिस्किट्स के अलग अलग 3 पैकेट्स हैं, उनकी वेट है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड द टोटल वेट. इन तीनों को अगर हम टोटल करते हैं, इकट्ठे करते हैं, तो व्हाट विल बी देयर टोटल वेट, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 33. This is question number 33. So first of all we have to find the weight of all these 3. हमें इन तीनों जो पैकेट्स का जो वेट है वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेंशन द डिफरेंट वेट्स ऑफ दीज डिफरेंट 3 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स इंडिविजुअली. पहले ये तीनों पैकेट्स के जो इंडिविजुअल वेट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट इट. ओके, सो फर्स्ट लेट्स राइट weight of first packet, weight of first packet of biscuit, weight of first packet of biscuit, that is 1 upon 16, 3 upon 12 kg. This is the weight of first packet of biscuit, that is 3 upon 12 kg. Okay, one more thing, देखिए here the weight is given in the fraction. तो हमारा जो weight है वो किस में दिया हुआ है? फ्रैक्शन में दिया है. Okay, and the second important thing is that you have to write the unit. Unit आपको लिखना, that is must. Clear? Second is weight of second packet, weight of second packet of biscuit. Okay, so now we have to find the weight of second packet of biscuit. Okay, 3 packets थे, first का weight था 3 upon 12 kg. Now we have to write the weight of second packet of biscuit, that is 5 upon 12 kg. 5 upon 12 kg. So this is the weight of the second packet of biscuit. Third one, weight of third packet, weight of third packet of biscuit, weight of third packet of biscuit. So what is the weight of third packet of biscuit? So the weight of third packet of biscuit is 1 upon 12 kg. That is 1 upon 12 kg. So this is the weight of the third packet of biscuit. Next,
अब हमें क्या लिखना है बेटा, नाउ वी हैव टू फाइंड द क्वेश्चन में लिखा है what is the total weight of 3 packets. So now we have to find the total weights of these 3 packets. Individually the given hai, so we have for finding the total weight of these 3 packets, what we are going to do, we are going to add the weight of all these 3 packets. तो इन तीनों पैकेट्स के जो अलग अलग वेट्स दिए हैं, we are going to add them and then we can easily calculate the total weight of all these 3 packets of biscuits. Okay, this was the first point. Second point is that their weight is given in fraction. तो इनके जो वेट्स हैं वो किसमें दिए हैं, सो द वेट्स ऑफ द पैकेट्स ऑफ बिस्किट इज गिवन इन फ्रैक्शन. ओके, सो यू हैव टू ऐड देम इन द फ्रैक्शन. ओके, तो फ्रैक्शन जब भी हम ऐड करते हैं हम क्या देखते हैं, दैट द न्यू डिनोमिनेटर should of all the given fractions, whether you have to do the addition, whether you have to do the subtraction, ascending order, descending order, आपको कुछ भी करना हो, the first thing you have to see that the denominators of the given fraction should be same. So as I can see, or you can see, the denominators of all these 3 given fractions is 12. So that means the fraction, all these 3 fractions have a common denominator, that is 12, and it will be easy for you to calculate the sum further. Okay, so let's find total weight of 3 packets. Total weight of 3 packets is equal to, of biscuit लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं. Okay, so if you want to write the biscuits, you can. Total weight of 3 packets of biscuits, वो हम कैसे निकालेंगे, by adding all the fraction, by adding the all given fraction. So let's add 3 upon 12 plus 5 upon 12 plus 1 upon 12. So this is the given fraction. Okay, so as we can see, the denominators of all these given fraction is same, so we will take its common denominator, that is 12. So common denominator में ले लिया 12. Okay, so let's add numerator 3 plus 5 plus 1, that is 3 plus 5 8, 8 plus 1 9, that will be 9 upon 12. And next you have to write the unit. So the unit is kg. So the weight of all these 3 total weight of these 3 packets of biscuits is 9 upon 12 kg. Okay, तो हमने क्या देखिए, कॉमन डिनोमिनेटर था 12, न्यूमरेटर हमने ऐड किया, दैट इज आफ्टर 3 plus 5 plus 1, that is 9. So this is 9 upon 12 is the total weight of 3 packets of biscuits. तो हम नीचे सॉल्यूशन सेंटेंस लिखेंगे, therefore total weight of all packets, therefore total weight of all packets of biscuits, the total weight of all packets of biscuits is 9 upon 12 kg. Okay, so don't forget to write the solutions and tests. A solution is must, so you must have to write the solution as sentence in the every sum. Okay, so this is the solution of question number 33 from your GK, sorry, from your maths. Okay, so just pause your videos here and note it down in your notebooks. Okay, चलिए moving next to the question number 34. Okay, let's move to the same question number 34 from the same chapter. Okay, now some questions from the some statements, हम इसका word problems बोलते हैं. So nobody is going to pronunciate it as a word problem. You are going to say it as a statement sums. Okay, तो कोई इसको word problem नहीं कहेगा, because problem कहोगे तो that will become a problem always. That will be a problem for you. So just take it as a
statement sums. Okay, so the next statement sum from is 34. Rohan bought 3 dresses for rupees 2469. Nitin bought 2 dresses of the same type. How much money did Nitin pay? तो देखिए रोहन ने 3 ड्रेसेस खरीदी हैं. ओके, एंड द कॉस्ट दैट ही हैड पेड फॉर ऑल दीज 3 ड्रेसेस इज 2469. तो 3 ड्रेसेस की कॉस्ट है 2469. फिर नितिन ने उसके देखा देखी सेम ड्रेसेस लिए हैं, बट उसने सिर्फ कितनी खरीदी? ही ओनली बॉट 2. नाउ वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बीइंग पेड बाय द नितिन. तो देखिए 3 ड्रेसेस की कॉस्ट दी है, तो 1 ड्रेस की निकालने के लिए व्हाट विल वी डू? वी विल डू, देखिए जब ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं सो वी विल डू द डिवीजन, कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं सो वी डू द मल्टीप्लिकेशन. सो हेयर द प्राइस ऑफ बिगर दैट मीन्स 3 ड्रेस की दी है, ज़्यादा दी है, एक की निकालनी है, कम की निकालनी है. फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर यू विल मूव, यू विल डू डिवीजन. ओके, देन नितिन की एक की हमारे पास जब आ जाएगी तो ज़्यादा की निकालनी होगी, तो दैट मीन्स क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द cost of 1 dress. Okay, the cost of 3 dresses given and we have to find the cost of 1 dress. Okay, and then we can easily find the cost of 2 dresses that are being purchased by Nitin. Okay, तो लिखिए first is, okay, the page question is 34. Cost of 3 dresses. Cost of 3 dresses is, what is the cost of 3 dresses? The cost of 3 dresses is 2469. So this is the cost of 3 dresses. Let's find out the cost of 1 dress. Okay, so cost easily निकाल सकते हैं 1 की. Yes, cost of 1 dress. So cost of 3 dresses is 2469. So we can easily find the cost of 1 dress. उसके लिए क्या करेंगे? We are going to divide rupees 2469 with 3. Okay, तो एक ड्रेस की कॉस्ट निकालने के लिए we will divide 2469 with 3. So let's divide it. Okay, 2469 divided by 3. Okay, so 3 8s are 24 minus 0 0, bring it down 6. 3 2s are 6, 6 minus 6 0, then bring down 9. 3 3s are 9, 9 minus 9. Okay, so the answer or the cost of 1 dress is rupees 823. तो हमारे पास क्या है? ये ड्रेस जो आंसर है दैट इज रुपीज 823. सो व्हाट इज दिस? 823 क्या है? कॉस्ट ऑफ 3 ड्रेसेस दी थी, 1 ड्रेस की निकालने की हमने 3 ड्रेसेस की कॉस्ट थी उसको 3 से डिवाइड किया. वेयर आई हैव शोन यू द डिवीजन एंड दैट यू आर गोइंग टू शो इन द वर्क एज वेल. तो आपकी डिवीजन प्रॉपर शो करनी है. ओके, सो कॉस्ट ऑफ 1 ड्रेस इज 2469 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज रुपीज 823. ओके, नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 ड्रेस इज 823. नितिन ने कितनी परचेज की? नितिन हैज बॉट 2 dresses. So if the cost of 1 dress we have calculated here, that is rupees 823. So for calculating the cost of 2 dresses, what will we do? We will do the multiplication. तो 2 ड्रेसेस की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? We will just simply do the multiplication. So let's do that. Okay, so first of all, cost of 1 ड्रेस कितनी निकालनी हमने? दैट इज रुपीज 823. कितने की निकालनी है? 2. कॉस्ट ऑफ 2 ड्रेसेस, कॉस्ट ऑफ 2 ड्रेसेस
is equal to rupees 823 multiplied by 2. 823 multiplied by 2. Okay. So 823 multiplied by 2. 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 8s are 16. That is rupees 1646. That is rupees 1646. That is rupees 1646. So this is the cost of 2 dresses. Okay, ये 2 dresses की cost है that Nitin has purchased. Okay, so just look back at let's look back at the question. Question में क्या दिया है? How much money did Nitin pay? तो नितिन कितने पैसे पे करेगा? दैट मीन्स नितिन हैज बॉट 2 ड्रेसेस, सो दैट मीन्स ही इज गोइंग टू पे द अमाउंट फॉर द 2 ड्रेसेस ओनली. सो कॉस्ट ऑफ 2 ड्रेसेस इज दिस 1646. सो द मनी पेड बाय नितिन और हाउ मच मनी नितिन विल पे, सो देयरफॉर नितिन विल पे रुपीज 1646 फॉर 2 ड्रेसेस. So this is the amount that Nitin is going to pay to the shopkeeper. Okay, so लिखेंगे लिए लास्ट में, therefore Nitin will pay rupees 1646 for 2 dresses. Therefore Nitin will pay rupees 1646 for 2 dresses. So 1646 is the cost of 2 dresses. Okay, so this is the solution of question number 34 from your book. Cost of 3 dresses was given. We have calculated the cost of 1 dress. फिर नितिन ने वैसे ही जो ड्रेस थी 2 ड्रेसेस खरीदी तो हमने कॉस्ट ऑफ 2 ड्रेसेस निकाला बाय मल्टीप्लाइंग. Okay, and this is the amount that Nitin is going to pay, that is 1646 rupees. Okay, so you can just pause your videos here and note it down in your notebooks. Okay, and one important thing that you all are going to show these 2 calculations. आपको अपने सम के अंदर ही ये प्रॉपर पूरी कैलकुलेशन है जो शो करनी है. ओके, ये नहीं कि इसको कहीं भी देखिए मैं थोड़ा साइड में ही किया है, बट दैट डजंट मीन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सम. अगर ये रफ वर्क होता तो मैं अपने उसको इरेज कर चुकी होती. सो दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट. ओके, सो यू मस्ट हैव टू शो दिस कैलकुलेशन, डिवीजन वर्क एंड दिस मल्टीप्लिकेशन एज वेल. क्लियर? चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द क्वेश्चन नंबर 35. Now I'm moving to the question number 35. Question number 35 is 3 baskets of mango weighs 12 kg 250 gram, 18 kg 500 gram and 17 kg 650 gram respectively. Find their total weight. तो देखिए इसमें अगेन जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 32 और 33 में किया था. सो द वेट ऑफ 3 बास्केट्स ऑफ मैंगोज इज गिवन. ओके, सो देखिए उन्होंने क्या बोला कि 3 मैंगो की बास्केट्स हैं. ओके, एंड द वेट ऑफ दोज 3 baskets of mangoes is given. So the weight of first basket of mango is 12 kg 250 gram. Weight of second basket of mango is 18 kg 500 gram. And the weight of third basket of mango is 17 kg 650 gram. Okay, find their total weight. Okay, so now we have to find its total weight. देखिए इसमें रिस्पेक्टिवली लिखा है. सो रिस्पेक्टिवली मीन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स. रिस्पेक्टिवली मीन्स बच्चे, सो देखिए जैसे 1 2 3 वेट दिया है, जो अलग अलग वेट्स दिए हैं, पहले 12 फिर 18 फिर 17. तो दैट मीन्स जो 12 है वो फर्स्ट का है, 18 है वो सेकंड का है, 17 है जो थर्ड का है. अगर रिस्पेक्टिवली नहीं होगा तो हाउ कैन यू केम टू नो कि मतलब फर्स्ट का वेट कितना है, सेकंड बास्केट का कितना है. रिस्पेक्टिवली मीन्स जिस ऑर्डर में 1 2 3 उसी ऑर्डर में उनके बास्केट्स के वेट इज गिवन है. ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 35. Let's do question number 35. Okay, so the first is the weight of 3 baskets is given. Okay, so weight of first basket of mango
weight of first basket of mangoes. Weight of first basket of mangoes is given. So what is the weight of first basket of mangoes? That is 12 kg 250 grams. That is 12 kg 250 gram. So this is the weight of the first basket. Okay. Next, weight of second basket of mangoes. So next, the weight of second basket of mangoes is given. That is, what is the weight of second basket of mangoes? That is 18 kg 500 gram. That is 18 kg 500 gram. So this is the weight of the second basket of mangoes. Third is weight of third basket of mangoes. Weight of third basket of mangoes is given. So the weight of third basket of mangoes is 17 kg 650 gram. That is 17 kg 650 gram. So this is the weight of third basket. So as you can see, the weight of first, second and three different baskets of mangoes is given, and in the question it is given, find their total weight. So now we have to find the total weight of all these three baskets of mangoes. इन तीनों का टोटल वेट बताना. सो फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड देयर वेट. हम सब बास्केट जितने भी उनका क्या करेंगे, वेट को ऐड करेंगे. ओके, तो लिखेंगे टोटल वेट ऑफ दीज थ्री baskets of mangoes. Total weight of these three baskets of mangoes. इन तीनों का total weight क्या है? So let's add them, kg and gram. So these are the two units in which their weight is being divided. The weight of first is 12 kg 250 gram. Second is 18 kg 500 gram. Third is 17 kg 650 gram. So this is the weight of three different baskets of mangoes. Now what we have to do is we have to find their total weight. So let's find out. 0 plus 0 plus 0, that is 0. 6 plus 5, sorry 5 plus 5, 10, 0, 1. 2 plus 5, 7. 7 plus 6, 13. 13 plus 1, 14. So let's write 4 here. Okay. 14, 1 यहाँ आएगा तो 1 next one will be here. 2 plus 8, 10. 10 plus 7, 17. 17 plus 1, 18. 8, 1. Okay. 1, 2, 3 plus 1, that is 4. So this is the total weight of all these three baskets of mangoes. That is 48 kg 400 grams. So you are going to write in the solution sentence. Therefore, total weight of question thought, find the total weight. Find total weight of all three baskets. The weight of all three baskets is 48 kg
400 gram. That is 48 kg 400 gram. So this is the total weight of all these 3 baskets. Okay. So this is the solution of question number 35 from your maths. Okay. Now moving next to the question number 36. Okay. So now we will move to the question number 36. So question number 36 देखिए बच्चे. Mayank got rupees 250 from his father. He spent 112 rupees 50 paisa on books, 119 rupees 95 paisa on shoes. How much total money he spent altogether? How much money did he save? तो देखिए इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो मयंक ने अपने पापा से 250 रुपीज़ लिए, आउट ऑफ विच सम ऑफ अमाउंट ही हैज स्पेंड ऑन परचेजिंग हिज बुक्स एंड सम ही हैज स्पेंट ऑन परचेजिंग शूज़. तो कुछ पैसों से शूज़ के ऊपर खर्च किए, कुछ बुक्स के ऊपर. टोटल मनी वॉज रुपीज़ 250. सो नाउ यहाँ पे हमें 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है. सो द फर्स्ट इज दैट इज हाउ मच टोटल मनी डिड ही स्पेंड. तो उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए. नेक्स्ट हाउ मच मनी डिड ही सेव. अब उसके पास टोटल मनी कितना इसने सेव किया. ओके. तो सबसे पहले हम निकालेंगे. देखिए total amount, the total money he is having, that is rupees 250. Money spent on shoes, money spent on total money spent on books. Now first of all we are going to calculate total money spent. Okay, this is question number 36. Okay, total money कितना है. दैट इज रुपीज 250. So this is the total amount of money that he has received from his father. Next, money spent on books. Money spent on books. Books के ऊपर उसने कितने पैसे खर्च किए. That is रुपीज 112.50 पैसे. Next, money spent on shoes. Now we will calculate the money he has spent on purchasing shoes. That is rupees कितना है. That is rupees 119.95 पैसे. So this is the different money that he has spent. Now first of all हम 2 parts में calculate. The first thing that we have to calculate how much money did he spend all together. So total money spent. Total money spent. ये हम कैसे निकालेंगे. By adding the total amount that he has spent. Rupees Okay, so let's add them. 0 plus 5, 5. 5 plus 9, 14. 1. 9 plus 2, 11. 11 plus 1, 12. 1, 2, 3. Next 1 and 2. So the total money he spent is equal to rupees 232 rupees and 45 paisa. So total money spent is 232 rupees and 45 paisa. Now टोटल मनी हमारे पास है, मनी स्पेंट हमारे पास है. नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द मनी सेव्ड. मनी सेव्ड वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. बाय सब्ट्रैक्टिंग. टोटल मनी जितनी थी उसमें से जितने पैसे खर्च हुए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मनी सेव्ड. मनी सेव्ड इज इक्वल टू रुपीज 250 माइनस रुपीज 232.45. So rupees 250.00 minus rupees 232 rupees 45
पैसे, rupees. Okay, now let's calculate. 0 minus 5 not possible, so ये भी 0, ये भी, so it will borrow from here. It will become 4, it will become 10. When it will give it to him, तो ये कितना हो जाएगा 9, it will also become 9. When it will give, then it will become 10. 10 minus 5, 5. ये simple बेटा subtraction है, कुछ नहीं है. 9 minus 4, 5. Point. 9 minus 2, 7. 4 minus 3, 1. 1 minus 0, 0. So the total money he saved is 17 rupees 55 paisa. Okay, therefore money spent is rupees 232 rupees and 45 paisa, comma money saved is rupees 17.55 paisa. So this is the amount of money that is being spent and that is being saved. Okay, so this is the solution of question number 36 from your maths book. Okay, so with this I am just ending the session here only, class. So I will see you again very soon in our next session. So till then everybody have a good day.